Hello guys, welcome back to the last and the final vlog of the Jaipur series. We're not gonna tell you everything now, and so without further ado, let's dive in. वही महारानी बाजार लागू कर दिया। वही सिटी पैलेस है, उसका 300 रुपये का टिकट है। सिटी पैलेस में? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा। जंतर मंतर है, उसका 50 रुपये का टिकट है। अच्छा। और एक महारानी का म्यूजियम है, महारानी की फैक्ट्री, जिसमें कोई टिकट नहीं, आज एंट्री फ्री है। हमने अपनी कार पहले ही पार्क कर दी थी और इसके बाद हम सीधा पहुंचे हवा महल, जो कि जयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंट्रेंस से जब आप सीधा आएंगे तो यहीं सामने आपको टिकट काउंटर्स मिलेंगे, जहां से आप हवा महल एंटर करने के लिए टिकट्स ले सकते हैं। हर एज ग्रुप के लिए यहां अलग प्राइसेस हैं। तो हमने टिकट ले लिया है और अब हम एंट्री ले रहे हैं हवा महल के This is the main entrance to the palace known as Anand Poli. And this is the second entrance called Chandrapoli, where you find the water fountain and the traditional Rajasthani style windows. Hawa Mahal is a 5-story palace which is the tallest building of the world built without a foundation. It was built by Maharaja Savai Pratap Singh in 1799 AD and was a devotee of Lord Krishna. The reason why the shape of it is in the shape of Lord Krishna's crown. The palace has 365 windows and is 87 feet high. It is connected to the city palace by a passage through which royal ladies came to view different processions passing through the main market streets. काफ़ी अच्छा कार्डियो हो गया है। आज संडे है तो काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे।
रियलिटी चेक देते हैं आपको। ये यहाँ पे एग्जिट के पास एक कैफ़े भी है। ये है हवा महल का फेमस स्ट्रीट व्यू जो आपने लोगों के फीड्स में देखा ही होगा। हमने यहाँ से निकलकर टुक टुक किया और अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ निकल पड़े। ये कितना ग्राम का? ये आपका 350 ग्राम का है। और जहाँ सर्दी होता है 0 डिग्री सर, ये वहाँ तक काम है। आप लोग सब कहाँ से? दिल्ली में ये आपके लिए ये वाला ये आपका 1800। ये जो मैरिनो है इसमें मैरिनो में पशमीना उनका पेश होता है। सर मैं तारीफ तो नहीं करता हूँ, जयपुर सिटी को आप 10-12 साल तक जाते हैं, इसी मायने अच्छा है। ये आपका 1800 इसमें आपको ऐसे प्रिंट भी मिल जाएंगे सर, और इस टाइप के जयपुरी प्रिंट भी। जब भी आपको धोना है भैया, वॉश करना है, गर्म पानी में नॉर्मल वॉश करते हैं, मशीन वॉश हैंड वॉश करना कोई भी दिक्कत नहीं। इसकी कम से कम 12-15 साल लगेगी। ये भी सेम 1800। अच्छा इसमें प्रिंट में बच जाना भैया, इसमें मेरे पास 5-6-7 प्रिंट होंगे जो कि आप We took the elephant one और इस तरह आपको पैक्ड क्विल्ट मिलता है। The last location is another famous spot of Jaipur, which is Jantar Mantar. It's one of the oldest astronomical observatories featuring the world's largest stone sundial. Built in 1724 by Maharaja Jai Singh II of Jaipur, its striking combinations of geometric forms have caught the attention of architects, artists, and art historians from around the world. ख़राब हो रही है अभी, सो थोड़ा ब्रेक ले रहा है। So guys, this is the end of this vlog. Hope you liked the Jaipur series. Do watch the other two if you haven't. Thanks for watching.